Hello viewers, welcome to the Learners Nursing classes. Today we will do a very quick multiple choice questions related to ECG as demanded, and in isme I will not be justifying so much. I will just give you the questions, the options and the answer. So very quick, so that it is a very short and a fast and a quick video. So let us start. Who developed an electrocardiogram? See here, they are asking the name of the person who has actually developed the electrocardiogram. Wilhelm His, Stewart, Hubert Munn and William Einthoven. So here the answer is William Einthoven. For the students, I want to tell you कि ये आप थोड़ा मगअप कर लो. I will take a detailed class on ECG, but then I'll take it later and it will be a big session. It will be 30 minutes, 40 minutes class. So in the case of a normal heartbeat, depolarization stimulus arises in which of the following? Epicardium, SA node, sinoatrial node, atrioventricular node, AV node, His bundle. What will be the answer? Sinoatrial node. So the depolarization in a normal heartbeat arises from the SA node. What does P wave represents? Depolarization of the atria, depolarization of the ventricles, represents the repolarization of the ventricles or depolarization of atria and ventricles both. What does P wave represents? Depolarization of the atria. The P wave represents the depolarization of atria. Which of these cannot be detected by an electrocardiogram? The rate and the rhythm of the heartbeat, the size and the position of the heart chamber, the function of implanted pacemaker, presence of blockage in the arteries of the heart, asymptomatic. Now इसमें ECG cannot detect. इसमें क्या ECG जो detect नहीं कर सकता है? See, the answer is the presence of blockages in the atria of the heart. That is asymptomatic heart when patient is not showing any symptoms. Now coming to the options again. रेट, जब आप ईसीजी निकालते हैं तो उसमें रेट भी आ जाता है और रिदम भी आ जाता है. एंड सम ईसीजी जो मशीन्स हैं वो इतनी स्मार्ट होती हैं, इतनी टेक्नो सेवी हैं कि उसमें आपको वो बता देगा कि कौन सा रिदम डिफेक्ट है. उसमें वो भी बता देगा कि साइनस एरिथमिया है, वीटी है या वीएफ है, वो भी बता देगा कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या टेकिकार्डिया है. नाउ साइज एंड द पोजीशन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स ऑल्सो विल कम इन द ईसीजी. ईसीजी की जो अगर आप देखो कि ईसीजी का जो ग्राफ पेपर होता है उसमें वेवलेंथ्स होती हैं. अगर आप when you see you can easily identify कि अच्छा इसको कोई साइज एंड पोजीशन ऑफ द हार्ट में कार्डियोमिगाली है या नहीं है, वो सब आ जाता है. द फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेड पेसमेकर इज ऑलवेज ईसीजी में आ जाएगा कि पेशेंट पेसमेकर पे है और पेसमेकर का इतना रिदम चल रहा है. सी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन. नाउ वेंट्रिकुलर मसल इज गेटिंग डीपोलराइजेशन. इसमें से कौन सा वो चीज़ इंडिकेट करता है? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, PR interval. QRS complex. Now always remember QRS complex, ventricular muscle depolarization. That is the QRS complex. What does the T wave represents in an ECG? What does T wave represents? Atrial diastole, atrial systole, ventricular diastole, joint diastole. Ventricular diastole. The T wave represents the ventricular diastole. What does the depolarization of ventricles initiate? What does the depolarization of ventricles initiate? Atrial diastole, atrial systole, ventricular systole, yeah, joint diastole. Ventricular systole. Now, depolarization of ventricles initiate the ventricular systole. Now, some people call it ventricular systole and some people call it ventricular systole. दोनों ही सही है. Counting the number of QRS complexes, which of the following can be interpreted? Rate of heartbeat, rate of breathing, cardiac output, stroke volume. जो QRS complex होता है उसमें which of the following can be interpreted? The answer is the rate of heartbeat. Which of the following waves of ECG represents repolarization? P wave, QRS complex, RS wave, T wave. T wave. The ECG represents the repolarization in the T wave. In a single circulation, the heart pumps. जब
एक जैसे वन सर्कुलेशन द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, ओनली ब्लड न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज द आंसर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. The depolarization stimulus for the normal heartbeat originates in, question is depolarization stimulus for a normal heartbeat originates in. So now I'll repeat the question. The depolarization stimulus for a normal heartbeat originates in epicardium, his bundle area, and atrioventricular node, AV node, and SA node. So now where does it happen? It happens in the SA node. Depolarization stimulus for a normal heartbeat originates from the SA node. A shortened PR interval slurring called a delta wave of the initial QRS deflection and prolonged QRS duration are characteristics of Wolff-Parkinson-White syndrome, atrial tachycardia, left bundle branch block, myocardial ischemia. See, shortened PR interval slurring called delta wave of the initial QRS deflection, prolonged QRS duration are characteristics of the WPW syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome. इसमें क्या होता है ना, पेशेंट सडनली चलते चलते कहीं कोलैप्स हो जाता है. तो दैट इज़ वन. अगर आपने देखा कि सडनली वो चल रहा था, नॉर्मल था, और सडनली ही कोलैप्स्ड. तो कई बार ऐसे केसेस में हम नॉर्मल इवैल्यूएट करते हैं तो एक ECG भी करवाते हैं, एंड देन वी विल फाइंड दैट देयर इज अ शॉर्टेंड PR इंटरवल एंड देयर इज अ डेल्टा वेव. एक ना P वेव के नीचे से एक छोटी सी वेव आती है, दैट इज अ डेल्टा वेव, एंड देन प्रोलॉन्ग QRS ड्यूरेशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Wolff-Parkinson-White syndrome. द क्लासिक ECG चेंजेस इन द मायोकार्डियल इन्फाक्शन आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही मतलब ईजी भी है. देखो, ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कैसे होगा? T वेव इन्वर्जन होगा, ST सेगमेंट एलिवेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल Q वेव होगा, या ऑल ऑफ अबव होगा? सी द आंसर इज ऑल ऑफ अबव. T वेव इन्वर्जन हो सकता है, ST सेगमेंट एलिवेशन हो सकता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल Q वेव. तो द आंसर इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ऑल ऑफ अबव. जनरली क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हम लोग लेंगे, अरे इसको तो ST एलिवेशन है, MI है. फिर बोलेंगे T वेव इन्वर्जन है, अरे इसको MI है. MI के कुछ घंटों के बाद T वेव इन्वर्जन आ जाता है, फ्रेश MI होता है तो ST एलिवेशन आ जाता है. तो डेवलपमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल Q वेव, MI. तो आंसर इज ऑल अबव. ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following wave is not represented. Which one is that? Depolarization of atria, repolarization of atria, depolarization of ventricles, and repolarization of ventricles. Now, in a normal heart, which activity is not happening? The repolarization of atria. The repolarization of atria in a normal healthy individual following wave is not represented. तो इसमें आंसर है repolarization of the atria. Which of the following correctly explained a phase or an event in a cardiac cycle in a standard electrocardiogram? Now इसमें correctly, which of the following correctly explains the event of a cardiac cycle? QRS complex indicates the atrial contraction. The QRS complex indicates the ventricular contraction. The time between S and T represents the atrial systole, and P wave indicates the beginning of the ventricular contraction. Here the answer is QRS complex indicates the ventricular contraction. देखो इसमें क्या कहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो एक्सप्लेन कर रही है कार्डियक साइकिल? तो आंसर इज QRS complex indicates the ventricular contraction, क्योंकि बाकी सब गलत है. Now, in a normal individual, the heart rate can be determined by dash in the ECG. Number of interval between two QRS complexes, number of P waves, interval between P and T waves, and number of T waves. So, answer is interval between two QRS complexes. This is the classic ECG change in MI, myocardial infarction. Myocardial infarction में सबसे classical ECG change कौन सा होगा? ST segment elevation, ST wave inversion, development of an abnormal
Q wave, all of these. Here the answer is all of these. ये question पहले भी आया था, different way में आया था. Now it is repeated and the question is modulated a little bit. So answer will be all of these. ST elevation भी होगा, T wave inversion भी होगा and abnormal Q wave भी होगा. In which of the condition can widen the QRS and tall tentered T wave is observed? See, tall tentered T wave and QRS. Hyponatremia, hyperkalemia, hyperglycemia, hyperphosphatemia. The answer is hyperkalemia. Hyperkalemia में अगर आप देखो जो एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, अगर आप उनका ECG देखो तो उनकी टॉल टेंटेड टी वेव रहती है बिकॉज दे आर ऑलवेज हैविंग हाई पोटाशियम लेवल्स. तो हाइपरकेलीमिया. A particular ECG changes observed in hypokalemia is now hypokalemia मतलब low potassium. Hyperkalemia means excess of potassium more than 4.5. Hypokalemia means less than 3. Now coming to ST segment elevation, option है U wave which is a position deflection after the T wave. Tall peaked T waves, widen QRS complex and increased amplitude. Here the answer is U wave which is a position deflection after the T wave. Hypokalemia में क्या होगा? U wave which is a position deflection after a T wave. I wish I could have shown you the image based, but then I wanted to cover this topic. I'll take a detailed class on ECG. And ECG identified by a PR interval trends to become longer with every succeeding ECG complex until there is a P wave not followed by what? QRS complex is observed in third degree atrioventricular block, second degree atrioventricular block type 2, second degree atrioventricular type 1 and first degree atrioventricular type 2. ECG identified by a PR interval tends to become longer with every succeeding ECG complex until there is a P wave not followed by. So here the answer is second degree atrioventricular block type 1. Now this is a difficult question. ये आएगा भी नहीं exam में, but then it is a part of it, so I am taking it. The wave which represents the excitation of atria are P wave, QRS complex, T wave, ST segment. The P wave. See, P wave ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? साइनो एट्रियल नोड से. साइनो एट्रियल नोड कहाँ होता है? एट्रिया में होता है. तो वेव दैट रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, द फर्स्ट स्टेप इज पी वेव. द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी वेव, टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, PQ कॉम्प्लेक्स. The answer is QRS complex. The depolarization of ventricle is represented by QRS complex. The heartbeat of a person can be determined by which of the following waves? See, heartbeat आप कैसे identify करोगे? P wave, QRS complex, ST segment, PQ interval. Always QRS complex. ये 2-3 बार repeat हो गया. घुमा घुमा के क्वेश्चन है. हार्ट रेट आप कैसे देखोगे? QRS कॉम्प्लेक्स से. QRS कॉम्प्लेक्स जैसे जितने QRS कॉम्प्लेक्स आते हैं उस हिसाब से हार्ट बीट डिसाइड हो जाती है पेशेंट की ECG रिदम में. द एनलार्जमेंट ऑफ ऑरिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑरिकल्स मतलब एट्रियम, द चेम्बर. Enlargement of P wave, enlargement of QR segment, depression of the ST segment and elevation of the ST segment. The answer is enlargement of the P wave. That will show you the enlargement of the auricles. The longest refractory period is found in which of the following muscles? Longest refractory period is found in skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles, facial muscles. The answer is cardiac muscles. The full form of ECG is electricity cardiac group, electrocardio group, electrocardium granules, electrocardiogram. So answer is electrocardiogram. The full form of CAD is coronary artery disease, carotid artery disease, carotid artery disorder, coronary angina disorder. See, answer is coronary artery disease. The positive electrode when recording a lead AVL on an ECG is, see, I'll tell you AVL क्या होता है और इसमें क्या होता है. जब भी हम ECG लेते हैं तो हम जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको प्लेस करते हैं. AVL मीन्स ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, देन कम्स एक होता है AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, एक होता है AVF दैट इज ऑगमेंटेड वेक्टर फुट. सो दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ द लीड. So the positive electrodes when recording lead AVL on an ECG is left arm, left leg, right leg, left arm, left leg.
See, now I told you augmented vector left, that is the left arm. The answer is left arm. Now, lead V3 and V4 represents which of the following views of the heart? The septal, inferior, atrial, lateral. See, V3 V4 लीड, जब भी कभी भी जब लीड लगाते हैं तो हम V1 V2 V3 V4 V5 V6 लीड लगाते हैं, और AV L AVR एंड AVF लगाते हैं, तब हम ECG निकालते हैं. तो इसमें क्या बोला है, V3 और V4 क्या दिखाएगा आपको? सेप्टल, inferior, anterior, lateral. हार्ट का कौन सा वाला? That will show anterior part of it. The last question is, left axis deviation is caused due to defects of the conduction system, atrial septal defect, right ventricular hypertrophy, and left ventricular hypertrophy. The answer is defect in the conduction system. The left axis deviation will show you the defects in the conduction system of the heart. Thank you so much, viewers. Like, subscribe, and share.